ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਐਡੀ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? So why you came there from South Africa? What do you think that? Okay, start. Okay, wait, I'm starting, right? Shashirikaj Punjabi. My name is Taku. I'm from Zimbabwe. I came here to study. I'm studying computer diploma in computer applications. Everything is nice. There's nothing bad I can say about Gurukashi. Everything is just good and nice. What can you say about Gurukashi, bro? Everything is perfect. Yeah, I'm here. Tinotenda Manyani from Zimbabwe. I'm here to pursue my degree in computer engineering. Yeah, everything. Our lab are well equipped, so everything is looking good. सर क्या की बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि हम गुरुकाशी आए हैं कंप्यूटर साइंस में, एक तो डिप्लोमा कर रहा है, एक कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहा है। बहुत ही अच्छे से पढ़ाई चल रही है इनकी यहाँ पे, और यहाँ के लोकल्स के बारे में भी ये बड़ा अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। सर इन्हों तो ऐ पूछो भी ये उतों मान के चलो साउथ अफ्रीका जो भी उरे आने का की डिसीजन है भी उरे किवें आए? So what do you feel about South Africa rather than this Punjab? How is South Africa? Like the difference with South Africa and Punjabi. Yes. Here in Punjabi, like people are friendly. Also, the reason why we came here is because, like, if you study here, there's a lot of in India. There is a lot of technology in India. It's nice. If you get a degree here in India and go back to Africa, you get a good job. So it's nice studying here this side because there's a lot we are studying and there's a lot we are getting from, lot of experience we are getting from Gurukashi University. कितों पता लगा ये इन्होंने भी गुरुकाशी? ये पूछ रहे हैं कि हमें पता चला कि इंडिया में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, अगर हम यहाँ से डिग्री हासिल कर लेंगे तो साउथ अफ्रीका में अच्छी जॉब मिलेगी, और उसके बावजूद में हम लॉट ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे गेन करते हैं ताकि हमें वहाँ पे अच्छी सैलरी मिल जाए। ठीक है सर, भी मतलब उते इतना दी यूनिवर्सिटी नहीं है? उते यूनिवर्सिटियाँ हैं कि पर यहाँ की इंडिया की डिग्री का ज्यादा वैल्यू वहाँ पे भी उते ज्यादा मतलब पर्सनालिटी है कि उतो दी जे उरो पढ़ के जांदा है। ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे जो हाई पोस्ट्स पे वर्क कर रहे हैं अभी साउथ अफ्रीका में, वो सारे डिग्रियां करके हिंदुस्तान से आए हैं, तो इसलिए इंडिया आना चाहते हैं अपनी डिग्री लेने के लिए, क्योंकि वहाँ इंडिया की डिग्री में बहुत ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, अच्छे से जॉब मिलती है। ठीक है भाई, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ? बस पंजाबी बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ फ्रेंडली रहे हैं सारे पंजाबी, और अच्छा फील कर रहे हैं हम यहाँ पे। एक गल है ना भाई, बाहर जिवें भाग जाने ना पंजाबी कह दिंदे ने कि अपने सोचਣ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨ ਲਾ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੁੱਛੋ। So what do you feel about the difference of language there? The difference in languages? Yes. How do you get adjusted there? I think we are going to learn bit by bit. Right now we just know Shashirikaj and also Hindi. We know Tora, you know, Tora learning. We are learning. I think maybe in 6 months or 1 year we are going to get there. We will be now knowing what we are saying. We will now know how to communicate with everyone. Yeah. ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? Yeah. ਖੇਡਣਾ? So which games you are like to play? You like to play which things you like to play? This side. Yeah. I think we like to play with football mostly, and we are learning to play like cricket. You know, in our country there's cricket, but it's no football is the main game we play. So this side cricket is viral, like everyone likes cricket, so we are enjoying everything here. We're enjoying it. We're just enjoying learning. ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे उधर फुटबॉल चलती है ज्यादातर, लेकिन यहाँ पे हम फुटबॉल और क्रिकेट बहुत सीख रहे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट। ठीक है, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਬਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? So how much you have local friends there? Yeah, local friends. Like now I have 3 local friends here, like 2 of my classmates and 1 in Gujarat, my friend in Gujarat, and the other 2 Punjabi friends.
The other two, they are here from Punjab, my classmates. They live in, one of them live in Mansa, the one of them live in Batinda. दो दोस्त हैं इसके यहाँ के लोकल, एक मानसा का है और एक पंजाबी है। ਇੱਕ ਪੀਵੀ 13 ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਵੀ 3 ਦਾ। ਇੱਕ ਸਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। So when you will went back to Africa, which thing you will never forget about this Punjab? About this Punjabi? Yeah. What else? Like I think I have enjoyed the festivals. Festivals. The festivals, most of the festivals here, they are so nice. Like last time there was I forgot the festival, but right now we are looking forward to enjoy Diwali festival. Yeah, we are waiting so that we enjoy it. We want to see the experience. Well, that will be done with everyone here. हाँ जी, की बोले सर? बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पे त्योहार अच्छे लगे और दिवाली सबसे ज्यादा अच्छी लगी, जो कि हम सेलिब्रेट करने वाले हैं आगे। ठीक है। इनके त्योहार यहाँ के पसंद आए हैं, जो ये वहाँ जाके नहीं भूल जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू सर, वेरी नाइस। Okay, thank you very much. Sat Shri Akal. बहुत बढ़िया लगा सुन मिलके। थैंक यू।